Hello and welcome back guys. अब हम करेंगे reflection and refraction of light question 6 to question 10. Let's start. A ray of red light is in air enters a semicircular block. What diagram shows the partial reflection and refraction? Reflection and refraction both are taking place. ठीक है ना? First off, let's make a normal for each of them. ठीक है ना? So we know. My bad. इसका नॉर्मल बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो. अच्छा नॉर्मल. अब मतलब क्या करना है हमने. देयर आर टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिफ्लेक्शन हो रही है तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट. द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is always equals to R when on a smooth surface. ठीक है ना. I is always equals to R मतलब ये वाला एंगल जो है, this angle must be equal to this angle. बट यहाँ कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा लग रहा है. these angles look unequal. तो ए इज नॉट द राइट आंसर. ए को कट कर दो. बी. बी में भी सेम नजर आ रहा है. दे आर नॉट इक्वल. सो आगे देखते हैं. लेट्स रिमूव दैट लुक्स अगली. या अच्छा आगे देखते हैं. डी. दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट. तो दे डू लुक इक्वल. ठीक है ना. दे डू लुक इक्वल. सो और फिर आगे सी देख लेते हैं. These two angle looks equal as well. अच्छा. अब ये तो हो गया कि the angles do look equal दोनों C और D में, right. लेकिन there is one more factor which is influencing the answer, which is gonna be the refraction. Refraction में क्या होता है. This is normal, right. ये जो हमने लाइन बीच में इमेजिनरी लाइन बनाई है, this is a normal. सो जब रिफ्रैक्शन होती है ना, और रिफ्रैक्शन में से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, मतलब जो ग्लास है दिस इज अ डेंसर मीडियम, और जो एयर है दैट इज अ रेयरर मीडियम. तो जब भी एक डेंसर मीडियम से लाइट निकलती है इनटू अ रेयरर मीडियम, द रे ऑलवेज डिविएट फ्रॉम द नॉर्मल. नॉर्मल से अवे जाती है, ना कि नॉर्मल के पास जाए. तो यहां से लाइट आ रही थी, तो द लाइट वाज कमिंग फ्रॉम हियर, एंड उसूली तौर पे it should have gone here because it was refracting, right. But क्योंकि refract हो रही है and it's moving from a denser medium to a rarer medium, it's not going from here to here, it is going from here to here. It is moving away from the normal. So that means D is the right answer. This is D, this is not C. ठीक है ना. This is, let me remove that. Actually I can't, sorry. This is D in my, I think, question 6. Yeah, this is D. This is a mistake from my end. Question 7. It's a repeated question, so you can see this is D and this should be D as well. So, question 8. A ray of light passes into a block. It travels through the glass block and then emerges into the air. Which angle is the angle of refraction and at the surface xy? Angle of refraction कौन सा होगा? This will be the ray of light entering the glass block, and this will be the ray of light traveling in the glass block. This will be the angle of incidence. ठीक है ना. And then this is the light emerging from the glass block. Emerging from the glass block. So मैंने आपको क्या बताया है. It is always जो मीडिया जो नॉर्मल होता है ना, उसके साथ वाली जो रे होती है नॉर्मल और रे के बिटवीन जो एंगल होगा दैट विल बी द एंगल दैट वी आर गोना टेक फॉर आइदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और जो भी होता है इंसिडेंस. ठीक है ना. तीनों के लिए विल हैव टू टेक द एंगल बिटवीन जो रे है एंड द नॉर्मल. सो
उसने पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है हमने. दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिफ्रैक्टेड. तो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं. लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन मिरर एज शोन. अच्छा, यहाँ से लाइट आई है and is going there. The angle x is equals to the angle y because the angle of incidence is equals to the angle of reflection. That is a law. ठीक है ना. Which row is always correct? पहले तो देख लेते हैं सारे A और C because angle of reflection is always equals to the angle of refraction incidence. तो आगे देख लेते हैं x. So यहाँ C, this is the angle of this is the ray of incidence, right? And this is the ray of reflection. So ये वाला एंगल होगा रे ऑफ इंसिडेंस का और ये वाला एंगल होगा रे ऑफ रिफ्लेक्शन का. So x will be the r. So 9, C is the right answer. Question 10. The light enters a glass block at an angle of incidence I and it produces a angle of refraction r in the glass block. Several different values of I and R are measured and a graph is drawn of sine I against sine R. Which graph is correct? पहली बात, the angle of refraction, the refractive index of glass block is approximately 1.5. ठीक है ना. It is approximately 1.5. So we have to find. और जो gradient होगा ना इनका, the I sin I over sin R का gradient जो है, that will be equals to the n, the refractive index of the block. ठीक है ना. So you have to keep that in mind. जो आपने formula पढ़ा हुआ है, the formula is n is equals to sine I divided by sine R. So that's exactly what they're showing us. Sine I इधर है y axis पे है, R x axis पे है. So if we calculate the gradient, it should be equal to the refractive index because it's very simple. This is the formula. ठीक है ना. So you have to understand that. So आगे move on करते हैं. If we find out what the gradient of this is, so हम refractive index निकाल सकते हैं. और अगर जब हम refractive index निकालेंगे, it should be the closest to 1.5 because that's the refractive index of glass. ठीक है ना. So एक second. Let's make a line. So this is approximately 1.6 and this this is approximately 1. ठीक है ना. B और C होंगे ही नहीं because it's a negative gradient. The gradient is going down. B और C होंगे ही नहीं. It's either A और D. तो हम अब निकाल लेते हैं. हमने अब gradient निकालना है, right? N will be equals to x y2 minus y1 over x2 minus x1. That is the formula of gradient. Y2 क्या है? Y2 will be 1 minus 0 divided by x2 which is 0.6 minus 0. अच्छा, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो फॉर्मूला में हमें नजर आ रहा है. इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. इट विल एग्जैक्टली बी द सेम थिंग जो फॉर्मूला में नजर आ रहा है. ठीक है ना. तो n विल बी n is equals to 1 divided by 0.6. 1 divided by 0.6 will be equals to 1.6667. n is equals to 1.6667 और आगे हम अगले वाले का निकाल लेते हैं. So this is 1 and this is 0.6. अच्छा जी, अब इन्होंने दिखाया हुआ है कि sin I is 1, n will be equals to 0.6. sin I is 0.6 जो y है और x पे है 1. तो 0.6 divided by 1 will be n will be equals to 0.6. So which one is closer? The n from part A is closer.
or you have to keep that in mind. The refractive index of glass must be greater than 1 because the refractive index of air is 1.00003, right? It is that value. So it must be more than 1 because a, air is considered as a rarer medium and glass is considered as a denser medium. So A is the right answer. I hope you understood that. It was a tricky question, but if you use a bit of a common sense, you'll arrive to this equation, and this equation will seem like the gradient of the graph, the sine I over sine x graph. So that's it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.